election in 2000 year 1977, 1978, and yeah, but it is a fact in the public domain that in Coloring Assembly constituency, a voter late Bengia Tamang was shot dead, and as you are aware, everyone is aware that sophisticated weapons like AK-47, it is hard that it is openly in the villages and with the public. And when, as per directive of the Election Commission, the licensed guns are kept in the Malkhana of police thanas, it is very open, and with everybody there is a gun, and openly they are using it and threatening the voters who are against their supporters. So this trend is never seen before in the election process in Arunachal Pradesh. For the first time, this is happening in Arunachal Pradesh. And number one. Number two, highest amount of money is being spent in this year. One individual candidate is spending more than 50-60 crore rupees. And I don't know if this type of expenditure is made in the election, how the development will take place. Ultimately, the state government, men in the power, they are to take the responsibility and shoulder the responsibility. And the law and order problem is a law and order problem is a state affairs, and state government cannot immune themselves saying that election is in progress and the model code of conduct is there, because maintenance of law and order, it is a duty of the state government, and they are to assist the election commission for fair and free election. जबकि ये नहीं हो रहा है अरुणाचल में, पहले हम लोग बाहर में सुनते थे कि जहाँ बाहुबली लोग इलेक्शन को जिताता है, अभी तो अरुणाचल में जिसका पास में पैसा और जिसका पास में ये बंदूक है, वो लोग इलेक्शन को जिता रहा है. जैसा अभी कोई इलेक्शन स्टेशन में ये पोलिंग स्टेशन में हम लोग सुना है, we have discussed the chief election officer also. He has also confirmed that some bridges and roads are damaged, due to which the polling personnel and the voter could not reach the destination. So if these things happen, this is a all-time record in Arunachal Pradesh. पहले थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन उतना लार्ज स्केल में बैलेंस कभी नहीं होता था इलेक्शन में, और मनी का फ्लो भी ऐसा नहीं होता था. पहले 1-2 हज़ार देने से भी, खैनी सदा देने से भी लोग सोचता था कि हम तो कुछ ले लिया है, ऑब्लिगेशन है. अभी तो वोटर लोग भी बोलता है कि 30-40,000 का नीचे में बातें नहीं करता है. Ultimately, this practice is started by the political leaders, and political leaders, they themselves will have to make a law for themselves कि election ये commission का rule को पहले how to implement it fully, they should decide and they should do. We social organizations, we NGOs will surely help the state government. But if this money culture and gun culture is not stopped, democracy is meaningless in Arunachal Pradesh. That's why we call this election, 2019 election, is the most blackest day, the darkest period in the history of Arunachal, the democracy. सर ये जो इंसिडेंट हो रहा है अरुणाचल का बाकी स्टेट में और बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतना नहीं हो रहा है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रहा है, ये क्या के लिए ज़्यादा हो रहा है? ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वहाँ हो रहा है, ये ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. क्योंकि अब पैसा ज़्यादा खर्चा करने के बाद में 1-2 बूथ के लिए अगर हार जाता है तो मेरा इतना रुपया नुकसान जाएगा बोल के, ये ड्यू टू मनी ओनली दिस इज हैपनिंग. पैसा नहीं होता तो ये, अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं होता तो उतना कभी भी नहीं होना था. सर आप ऐसे नीचे सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, तो वो भी नीचे एरिया है, तो आप लोग का सोसाइटी का तरफ से कोई ऐसे कुछ एक्शन बाय कुछ ये है? नहीं, हम लोग इसलिए 100 मत तो हम लोग आ गया, निकल गया, हम लोग भी कोशिश कर रहा है.
today we were to meet Chief Secretary, but he is out of station. और लोग दिल्ली में जाकर बैठ रहा है, यहाँ लोग मर रहा है, और लोग वहाँ मौज मस्ती कर रहा है. तो चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन, चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन. हम लोग चाहिए जो चीफ इलेक्टेड ऑफिसर तो ये तायंग साहब से हम लोग मिला है, बातचीत किया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशंस. तो बातचीत किया है. वी विल ऑल्सो श्योरली ट्राई टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर से प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम भी है. हम लोग भी अपना इसी एरिया में हो रहा है, तो वी आर कंसर्न, इसलिए हम लोग सो मत तो आ गया है. कोई कंप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, हम लोग आ रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग पॉलिटिकल लीडर लोगों से भी हम लोग यही अपील करेंगे कि आप लोग ये डबल पॉलिटिक्स को लीडर लोग मत कीजिए. किसी को टिकट देगा, किसी को फाइनेंस करेगा, ये दोनों का बीच में लड़ाई करने देगा, और लोग दूर से मौज मस्ती करते रहेगा, देखते रहेगा. ऐसा नहीं होना है. जिससे आदमी को लड़के मरने दो बोल के वो लोग लड़ने लेकर लगा के दिल्ली में जाकर आराम से बैठ जाएगा. वी कंडेम दिस वन ऑल्सो. पॉलिटिकल लीडर लोग, अभी चीफ मिनिस्टर यहाँ होना चाहिए था, बिकॉज चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट हैज नॉट रिजाइन, इट इज ए फुल प्लेस गवर्नमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है. तो इसको कैसा how to find out the solution if there is any problem, that government should have decided it. कि जरूरत उनसे कैंडिडेट लोगों को बुला करके ऑल पार्टी मीटिंग बुला के गवर्नमेंट बातचीत करना चाहिए था. गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डू दीज थिंग्स एंड वी एनजीओज, वी सन्यासी एलिट सोसाइटी विल ट्राई our best to do all these things as it is happening in our own area. And it is not only happening in our own district, it is a black spot to the Nissi community also. When people say that in all other districts it is not happening, why in Nissi areas only? So we have taken it seriously. हम लोग भी जरूर कोशिश करेगा. And sir, what will be your comment over the recent live bomb that has been recovered in the Polorian helipad? That exactly I don't know whether this has happened or not, this is recovered or not. I have not seen any government statement, police statement. But the one thing is sure, that officers involved in the election duty must not only be neutral, but seems to be neutral. When officers are biased, then ultimately people get angry, and the angry does not know any limit. It can go to extreme. Though we don't encourage it, we don't support it, but we will appeal that the election officers engaged in the election duty should not only be neutral, but they should seems to be neutral. Sir, आपका इन्वेस्टिंग जो ग्रीन इलेक्शन कैंपेन शुरुआत किया था सेपा से, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा सर? क्योंकि अभी जो इलेक्शन दिखा खुद बोल रहे थे पैसा का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुआ है. नहीं, हम लोग जो शुरू किया था वो कुछ एरिया में इन्वॉल्व हुआ. इंटेलेक्चुअल ये सर्कल में थोड़ा इफेक्ट तो हुआ है. जैसे यूजुअली में हम लोग अनकॉन्टेस्ट कर दिया, यूजुअली माई ओन कॉन्स्टिट्यूंसी. तो जैसा कुरुंग को में या दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, before we advanced to some more things, election came and it happened. So we'll appeal the next executive body member. हम लोग का इलेक्शन तो आ रहा है सितंबर अक्टूबर में. जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर को हम लोग 5 years पूरा कंप्लीट काम करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे. इमीडिएटली हम लोग का कोई प्लान नहीं है, बट इन कॉलोरिंग वन क्लीन ऑर्गेनाइजेशन, देयर बेंगिया वेलफेयर सोसाइटी, दे आर डूइंग देयर हार्ट टू डिफ्यूज द टेंशन. जो मरने वाला भी बेंगिया था, इवन देन दे आर ट्राइंग their best to diffuse that, and due to them only some problems are avoided. Sir, after second phase of the re-election there, again the people are demanding from this two, particularly from these two districts, Paradadi and KUMEY, for the re-poll. So what do you have to say? Do you encourage re-polling? I believe in that everybody must have the right to use their adult branches. If anybody is debarred from using their adult branches, then let there be not only re-election, second re-election, third re-election, whatever there may be, it should be there. Every individual should be allowed to use their adult branches.
And through you will appeal the candidates also that they must also take into account that every voter has a right which comes once in 5 years only. So they should be allowed to use their own voting right. According to their own mind, they should be allowed to choose their rights. But booth capturing is the most discouraging incident, and this should be discouraged by all univocally, and we also condemn the booth capturing. So there is already MCC है, फिर भी इतना सारा हथियार कैसे आ गया वहाँ में? वो openly related in that. This is the failure of the state government because the hathiyars, the weapon, they have crossed Kimin Gate, Bandardua Gate, Yajali Gate, and all other gates. They are even catching the 10,000-15,000 rupees case. So how these weapons are coming to those areas, we don't know. It is openly being used by the people there to threaten the other group. So this is a failure of the state government and law enforcement machinery.